So I think participants are with us. So good afternoon to all once again. And we'll begin. In my previous, I left with the just a framework of outcome-based education. और उस framework में we have discussed at length about the different aspects of outcome-based education. That includes the different approaches which we have already discussed about the student-centric approach, then different components of outcome-based education, which we have discussed about the how to design or how to what are the parameters of designing of curriculum based on outcome that and along with the teaching learning process, how the outcome based OBE deals with the teaching learning process and its association with the assessment. So teaching learning is a different aspect which focuses on different pedagogies, and that pedagogy I'm not going to cover in detail, but whatever the different techniques you adopt for completing a particular module or a particular subject, or we can say that a particular unit or a topic. So जो pedagogy का जो aspect है, which I'm not going to cover, but I covered at length about the designing of the vision statement, the designing of mission statement, a very specific to be have a brush up with that. Vision is related with the every institute. Institute has different types of program, and linked with that program and vision statement, we create a mission. Mission means steps to complete or achieve that vision. Then we'll have a different program. So we write program outcome, so or program educational outcome. So program outcome, the simple meaning of simple मतलब होता है program outcome का मतलब जो भी आपके यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे बीए का प्रोग्राम, बीएससी का प्रोग्राम, बीकॉम का प्रोग्राम, एमए का प्रोग्राम, एमकॉम का प्रोग्राम, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड, वॉट एवर प्रोग्राम इज रनिंग, उस प्रोग्राम को पास करने के बाद 2-3 साल में स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटी, वो कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, दैट विल बी योर प्रोग्राम आउटकम. So program outcome is always after passing a program 2-3 years के अंदर जो उसमें क्वालिटीज डेवलप होती है, दैट इज नोन एज द प्रोग्राम आउटकम. देन प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. प्रोग्राम आउटकम इज जनरली ब्रॉड टाइप के होते हैं, जो कि वो एट्रीब्यूट्स हैं जो बच्चा पास करने के बाद 2-3 साल में वो शो कर पाएगा. प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्या प्रकार की नॉलेज, कौन सी स्किल और कौन सा एट्रीब्यूट या एटीट्यूड इसमें डेवलप हुआ है, वो कहलाता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. देन प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इज ऑलवेज लिंक्ड विद द कोर्स आउटकम. अब ये कोर्स आउटकम बोले या सब्जेक्ट के आउटकम, जिसको हम ओबीई की भाषा में लर्निंग आउटकम या कोर्स आउटकम बोलते हैं, और इन सिंपल टर्म इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, ये मैं आपके साथ अभी इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज ए टीचर मैक्सिमम टाइम हमारा जो फोकस होता है वो है लर्निंग आउटकम के ऊपर. वो लर्निंग आउटकम का सिंपल सा मतलब है कि यदि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई मस्ट हैव डिसाइडेड समथिंग कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए. तो सपोज करो जैसे आज मैंने आपको लिया है कि ओबीई में पढ़ा रही हूँ, आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्यूरिकुलम डिजाइनिंग बता रही हूँ, तो मेरा जो लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए आज के लेक्चर का, कि माय स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड outcome based education, its various terminologies, its importance and all these things. Then they will be apply outcome based education in their day to day teaching learning process, in their designing of curriculum and assessment tools. Then they will be able to differentiate between program outcome क्या है, program specific outcome क्या है. They will be able to decide to write program outcome, program specific outcome, and especially they will be able to write various learning outcomes related with their subject. तो ये क्या है, ये मेरे आज के लेक्चर के गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिसाइडेड एंड डिजाइन माय लेक्चर इन सच अ मैनर दैट कि आप उस ऑब्जेक्टिव्स को, मैं अपने उस लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाऊँ. तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर विल बी और माय डिस्कशन विल बी फोकस्ड ऑन
instructional objectives and learning outcome. So please do not get confused with learning outcome, that means course outcome. कोर्स क्या है? कोर्स मतलब आपका विषय, और विषय के आउटकम्स को आपको कैसे लिखना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इश्यूज की एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और लर्निंग आउटकम क्या होते हैं. देन हाउ टू राइट लर्निंग आउटकम, what are the different areas of learning and Bloom's taxonomy of cognitive domain, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. So let us understand what is aim. Aim, objectives and learning or course outcomes. So the aim of a module or program is a broad general statement of teaching intention written from the teacher's point of view. जैसे मैंने आपको बताया था टीचर सेंट्रिक अप्रोच और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच. तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब जब हम टीचर के इंटेंशन से कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो वो कहलाते हैं रिटन फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट इंडिकेट द जनरल कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मॉड्यूल. तो यूजुअली जो है प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम्स जो है दैट आर बेसिकली वी कैन से दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मॉड्यूल और प्रोग्राम इंडिकेट्स ऑफ द स्पेसिफिक एरिया एंड दैट द टीचर इंटेंड्स टू कवर इन ए ब्लॉक ऑफ लर्निंग. मतलब जैसे यदि मैंने कहा कि प्रोग्राम आउटकम या प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम, ये क्या है? ये ब्रॉड आउटकम है जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स 2-3 इयर्स में वो डेवलप होंगी. तो हम इसको बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं. सो द और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और वी कैन से दैट the objective of a module or program indicates of the specific area that the teacher intends to cover in a block of learning. So we call it program specific, or जैसे student would understand the impact of lifestyle on both local and global environment. अब ये क्या है? ये जो है this is some sort of a program objective है जो कि which is written in the form of a teacher's point of view. So अब course और learning outcome क्या है? Course and learning outcomes are a statement of what a learner is expected to know, understand and be able to demonstrate after completion of a process of learning. अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग कुड भी एक लेक्चर के बाद भी हो सकता है, एक मॉड्यूल के बाद भी हो सकता है और एक एंटायर प्रोग्राम के बाद में भी हो सकता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट अ लर्निंग आउटकम मेनली फोकस ऑन what the learner has achieved rather than the intention of the teacher. टीचर के इंटेंशन की तुलना में लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि क्या स्टूडेंट what student will achieve after completion of a module or a program or of a lecture. What that learner can demonstrate at the end of learning activity. कि कौन सी चीज बच्चा डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा, कौन सी चीज वो शो कर पाएगा, कौन सी चीज वो सीख पाएगा हमसे. That is the basic purpose of this learning outcome. So learning outcomes are more precise, easier to compare and far clearer than the objective. From one perspective, we can say that learning outcome can be considered as a sort of common currency. एक वो चीज है that assists module and program to be more transparent at both local level and at international level. तो सीधी सी बात है, यदि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये हमारा क्या है? ये एक ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. अब ये क्या है? ये हमारा एक प्रोग्राम आउटकम है कि हमारे बीए का जो स्टूडेंट है वो ही विल हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी एंड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. ये क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अचीव होगा. अब इसके लिए हमारा जो कोर्स है वो हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स डाल रहे हैं या जनरल इंग्लिश का कोर्स डाल रहे हैं. तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के को पढ़ने के बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश में से सिंपल एक छोटा सा है कि भाई आपने कोई टॉपिक है या कोई आइडिया, उसको पढ़ने के बाद उसमें कौन सी क्वालिटी डेवलप होगी, दैट इज बेसिकली कोर्स आउटकम या लर्निंग आउटकम है. So learning outcome are the common currency that assists module or program to be more transparent at both local and at the international level. So learning outcome represent one of the essential building block of transparency within higher education system and qualification. That is basically learning outcome is the base of any outcome based education. So learning outcome को यदि हम लिखते हैं तो why use focus on intended learner outcome. तो इंस्ट्रक्शनल इंटेंट भी शो करता है. व्हाट विल आई टीच,
direction of instruction, how I teach it, and guidelines of evaluation, how will I know student have learned. Learning outcome encompasses the instructional intent, direction of instruction, and guidelines for evaluation also. So, instructional intent matlab what it shows the course, it shows the teaching learning process, and it shows the evaluation procedure also. So, learning outcome has four basic components that I always call it ABCD. That is, A means audience. The student will be for whom you are writing the learning outcome. इसकी structure लिखते समय the student will be, that means for whom I am writing. Identify, छोटा सा एक लेते हैं, take an example. The student will be able to identify the lab equipment necessary for the demonstration. मतलब behavior क्या है? Identification of the lab equipment. देन कंडीशन क्या है? व्हेन शोन अ पिक्चर, जब आप कोई पिक्चर शो करेंगे तो उसमें से वो लैब इक्विपमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा. एंड डिग्री मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी, 100% लेवल ऑफ एक्यूरेसी. So this is ABC, मतलब A मतलब audience, B मतलब what behavior he can show, action that is we call condition when shown, किस condition में, और degree मतलब at what proficiency level he will show that condition. So audience means specifies the learner for whom the objective is intended. Behavior means describes the capability of the learner following instruction. Stated as a learner performance, stated as observable behavior, describe a real world skills like test versus performance. So B and C matlab condition, describe the condition under which the performance is to be demonstrated, like equipment, tool, aid, or reference of the learner, material, course, environment in which learner has to perform. Degree means describe the level of proficiency required to indicate successful completion of the objective. So, how to write learning outcome? The first point by Benjamin Bloom. Hello. Mr. Madankar, you want to say something? No. Okay, please keep your mic. So Benjamin Bloom has coined the term taxonomy. He has coined the term learning as a process built upon formal learning to develop more complex level of understanding. तो जब भी हम कोई लर्निंग आउटकम बनाते हैं तो हमें हमेशा प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम अपना लेसन प्लान डिजाइन करते हैं. तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग. तो वी हैव 6 कॉग्निटिव लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये 6 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज which is called as the classification or taxonomy of. So what are the different areas of learning? What are the aspects of growth through curricular input growth? So we have 3 different domains. One is called cognitive domain, another called is affective domain, and third one is called as the psychomotor domain. So this cognitive domain basically deals with the knowledge, thinking, and with your classroom content, we call it. Then we have affective domain, which basically deals with the attitude, with the development of a certain kind of attributes. Then the psychomotor deals with the skill, we call it the training part or skill part. So if you look at the cognitive domain, it is divided into 6 parts. Cognitive domain मतलब जो knowledge है, जो आपका the activity which is performed with the help of your brain related activity है. We have 3 type of H: head, heart, and hand. So head related activity usually we call comes under the cognitive domain. Heart related activity, that is your emotions, that is your attitude, is comes under the affective domain. And hand related activity, that is the skill or manipulative skills, lab activities, all comes under the psychomotor domain. So if you look at this 3H, cognitive, that is head, affective, heart, and hand, that is psychomotor domain. Now head related activity is again divided into 6 parts, that is knowledge. First level, lowermost level is knowledge and remembering or remembering. Second level, comprehension or understanding. Third level, application, applying the knowledge.
analysis, synthesis, and evaluation. Similarly, the affective domain, receiving, responding, valuing, organization, and characterization. It has 5 different parts. Then psychomotor domain, imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalization. Let us understand all these 3 domains with the 3 different examples I am going to pose before you. So just imagine if I have to explain you or you want to understand the cognitive domain, let us take a very simple example of a 6 months old baby. एक 6 महीने का छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को एवरी डे मदर शोज फैन दिखाती है, ऊपर पंखा है और बेबी को हर रोज फैन दिखा करके मदर से फैन। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अब he started little bit थोड़ा सा वर्ड्स निकालना शुरू करता है और जैसे ही उसके सामने कोई अदर घूमती हुई चीज लाइक फिरकी या कुछ भी आता है तो चाइल्ड सेज फैन। नाउ व्हाट इज going on as per the Bloom's taxonomy? When mother shows fan, child remember the fan with the word or object with the word fan. Then little bit उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जैसे ही वो थोड़ा सा समझता है तो वो क्या करता है कि उसको एक समझ में आता है कि घूमती हुई चीज मतलब फैन। देन जैसे ही कोई दूसरी, तो वो लेवल कौन सा हुआ उसका अंडरस्टैंडिंग का, दैट इज कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आया, जहां वो फैन के कुछ एट्रीब्यूट समझा कि घूमने हुई चीज मतलब फैन। देन जैसे ही कोई घूमती हुई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है, चाइल्ड सेज फैन, तो हियर ही इज एट द लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग कि घूमता है मतलब फैन। नाउ अब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब जब भी उसको गर्मी लगती है he indicates the fan. What does it mean? He is at the level of application where he understood that if fan moves, it gives cool air. So whenever he feels uncomfortable, गर्मी लगती है, he indicates and apply that कि fan. Then थोड़ा बच्चा बेबी बड़ा होता है, he started crawling. क्रॉल करना शुरू करता है, अपनी जगह से मूव करना शुरू करता है। अब जब भी गर्मी लगती है he crawl and reaches towards the cooler. Now see, as a teacher you understand these 2 phenomenon. The child has concept of a fan also, he has concept of cooler also. Now he has analyzed और जब भी गर्मी लगती है वो क्रॉल करके कूलर के सामने चला जाता है। So he has at the level of understanding of analysis and then synthesis. अब जब भी गर्मी होती है, instead of showing fan, he crawl and sits before the cooler. मतलब he got the attribute of fan also. उसको उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आया। अब उसने कंपेयर किया कूलर और फैन, which one is better. Whenever he feels hot, he has made his mindset and goes before the cooler. So in that level वो evaluation तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहला लेयर नॉलेज, then understanding, then application, then analysis between fan and cooler analysis, then forming an opinion or synthesis which one is better, that is the cooler. And now whenever he feels hot, he goes before the cooler. So that is a final evaluation process. Similar way, the another aspect for the Kritval's taxonomy, we call it affective domain. So let us take another example. That example is associated with your emotions. So whenever any sound और एनी रेडियो के ऊपर कोई सॉन्ग बजता है तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई रेडियो पर सॉन्ग बजता है तो हम क्या करते हैं? कैन एनीवन विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि रेडियो पर कोई सॉन्ग बज रहा है या कहीं पर, तो हम क्या रिएक्शन करते हैं? कैन एनीवन? क्या करेंगे आप? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. As I already told you in my first lecture, I want an interaction, then you will enjoy the process. तो आप क्या करेंगे? Can anyone? मैडम हम उस सॉन्ग को फील करने की कोशिश करते हैं। तो 2 तरह की क्या करेंगे आप? कोई सॉन्ग बज रहा है तो क्या करेंगे? You will react in 2 manners. गुनगुनाएंगे उसके साथ, वो just a minute, गाने just के a साथ minute. Okay. तो या तो आप 2 तरह से रिएक्ट करते हैं, या तो गाने रेडियो की साउंड बढ़ा करके, जैसे सर ने बोला कि वो गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उस गाना आपको नहीं पसंद आया तो आप क्या करते हैं? रेडियो की साउंड कम कर देते हैं.
तो दोनों कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, पहले आप रिसीव करते हैं, देन यू रिस्पॉन्ड, आइदर यू इंक्रीज द वॉल्यूम और उसके साथ गाने लगते हैं, या आप उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं. So once you increase the volume or try to focus on the song, that means you are trying to respond in a positive manner, means you have associated with that response, responded positively. Or when you decrease the volume, that means a dislike, you dislike and you responded negatively. When you start positively, you start thinking about that, जैसे सर ने बोला कि वैल्यू करने लगते हैं, आइदर यू स्टार्ट उसके साथ गाने लगते हैं, या आप ये कोशिश करते हैं कि कौन सी पिक्चर का गाना है, इसका सिंगर कौन है. देन इसके बाद तो आप कौन सी स्टेज पे हुए, पहली स्टेज हुई आपने रिसीव किया, देन again you have tried to focus on that, then you responded either increasing the volume or decreasing the volume. Once you increase the volume, you try to value over that, आप उसके सिंगर का नाम जानने की कोशिश करते हैं, आप उसके साथ गुनगुनाना करते हैं, आप उसके पिक्चर का नाम जानने की कोशिश करते हैं. देन यू गॉट दैट, ओ इट इज द सॉन्ग ऑफ संग बाय लता मंगेशकर. तो देन आप क्या करते हैं, लता मंगेशकर के बाकी गाने को सुनने के लिए कैसेट्स लाते हैं, या रेडियो पर और गाना सुनते हैं, या सीडी देखते हैं, वॉट एवर यू स्टार्ट, यू हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग. एंड देन आपको लगता है कि यस, एक कैरेक्टर है कि आपकी एक वैल्यू डेवलप हो जाती है कि यस, लता मंगेशकर सॉन्ग्स आर गुड एंड शी इज अ गुड सिंगर. So whenever you ask, anybody asks you who is your favorite singer, you say that Lata Mangeshkar is my favorite singer, or Kishore Kumar, or whatever singer, or whatever type of film, or whatever type of song you like, you say that, and it's a part of that you are liking will be developed. So in that manner our affective domain works. कई बार लाइफ में ऐसा होता है, we meet or we listen something, we like it, we try to get it more about it, we try to arrange more information, and we value that content, we started thinking in that, and it is a character हमारा built होता है. The same manner every activity related with our emotional aspect deals with that. कई बार ऐसा होता है, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलते ही हमें लगता है कि I don't like it, we don't want to talk it again. But sometimes while looking at some person or talking to someone, we try to ask, or we try to develop some type of affinity with that. We try to start talking, and then we develop a positive attitude towards that. So in the same manner, this affective domain works. Then third domain is related with the psychomotor domain. Psychomotor domain means development of skill, development of any sort of training, फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो लैब एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के ऊपर ग्राउंड की एक्टिविटी हो, कोई फुटबॉल खेलना हो. So let us take one a simple example of riding of bicycle. हम सभी ने अपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी है. So whenever a child come across with a bicycle, आप भी अपने olden days में याद करिए, when you have first time seen the bicycle, हम क्या करते हैं, a child gets attracted towards the bicycle, then अभी started manipulating with the bicycle, हम हैंडल पकड़ के चढ़ना शुरू करते हैं, हम उसके पैडल को घुमाने की कोशिश करते हैं. Then gradually हम क्या करते हैं, we try to manipulate, we are at the stage of manipulation, that is third stage, एंड वी ट्राई टू हैंडल बाइक को, जो बाइसिकल है उसका हैंडल घुमाते हैं, उसको सीधा हाथ से लेकर के चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे से ग्रेजुअली पैर उसके पैडल पे रख करके एक पाँव से चलाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा थोड़ा धीरे धीरे मैनिपुलेट करते जाते हैं, धीरे धीरे प्रिसीशन आता है, एक पैर से बदले हम दोनों पैर से बैठ करके साइकिल, कैसी साइकिल जिसको बोलते हैं ना, वो चलाना शुरू करते हैं. देन ग्रेजुअली सीट पर बैठ करके सीखते हैं, एंड धीरे धीरे हम कंप्लीट साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं. और फिर जब हम सीख गए तो हमको पता ही नहीं पड़ता कब हमने साइकिल पर पैडल डाला और उसके ऊपर बैठ करके अपने स्कूल तक पहुंच गए. सो दैट इज अ नेचुरलाइजेशन. तो इस तरीके से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है. ट्रेनिंग, हम स्किल्स सीखते हैं, और स्किल्स जिसको हम इमीडिएटली जैसे ही आप सीखते हैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. तो साइकोमोटर डोमेन की जो स्टेजेस हैं वो है इमिटेशन, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, ट्राइंग टू मैनिपुलेट दैट ऑब्जेक्ट, ट्राइंग टू लर्न. जैसे फुटबॉल ग्राउंड का एग्जांपल है, हम फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट हुए, हमने फुटबॉल को हिला डुला के देखा, उसको थोड़ा सा
पुश किया ग्राउंड के ऊपर, फिर हाथ से शुरू किया, फिर धीरे धीरे हम पैरों से उसको हैंडल करना शुरू करें, देन ग्रेजुअली प्रिसीशन आता गया और फाइनली हम फुटबॉल सीखना खेलना सीख गए. So the same way, like we learn cycle riding, we learn lab activity. So first stage is imitation, then manipulation, then gradually getting precision on the manipulation over that, then articulation, it will be a part of our, and then naturalization. So articulation, precision and articulation, that means complete learning that is skill, and finally naturalization, it will be a part or habitual हम हो जाते हैं. The same way we learn the swimming, we learn riding of bicycle, we learn any riding of any vehicle, we learn the any skills through this psychomotor domain only. So we have 3H: head, heart, and hand. So heart or head activity, that comes under the cognitive domain. It has 6 levels. Affective domain, it is related with the receiving, responding, valuing, organization, and characterization. Same way, psychomotor domain, imitation, manipulation, precision, articulation, and then finally naturalization. So these all are the three different domains of the cognitive, affective, and psychomotor domain. One is related with the knowledge, second is related with the emotions, and third with the development of your skills. So all these three domains is important for teaching. The learning of these three domains is important in the process of teaching, learning every day. But now, as far as the classroom is concerned, we most of the time we deal with the cognitive domain. So in the case of cognitive domain, we have these areas of learning. As far as the taxonomy is concerned, it was given in the form of noun. Later on, these taxonomies were converted in the form of a verb. While writing the instructional objective, we convert it into the terms of a verb. So let us take one first cognitive domain. As you can see on the screen, the first tier was the knowledge. It was converted into remembering. Second tier was comprehension. It was converted into understanding. Third tier was application. It was converted into applying. Fourth tier was analysis. It was converted into analyzing. And fifth tier was synthesis, which was replaced with the evaluation, evaluating. And last one was the evaluating is converted into, it was replaced with on the sixth place, and creating. So we have remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creative. Cognitive domain, noun form is converted into verb form. Then affective domain, so receiving, responding, valuing, organization, and conceptualization, characterizing by value or value formation of a concept. The same thing, receiving, responding, valuing, organization, and conceptualizing, then characterizing by value or conception. Then in case of psychomotor domain, imitation, that is imitating, manipulating, precisioning, articulating, and naturalizing. So this is the verb form, all the three areas of learning. Now let us focus on Bloom's taxonomy. Previously, the Bloom has given the 6 domains. It was proposed in 1956, proposed that thinking is composed of 6 successive levels arranged in a hierarchical order: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. All these activities are controlled by brain and brainstem. So Bloom's taxonomy is basically taxonomy of thinking. तो हम थिंकिंग को 3 तरीके के लेवल में डाल सकते हैं: लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो पहला है रिकॉल एंड comprehension. Recall and comprehension is comes under the lower order thinking. Then using application means using knowledge in new situation. Analysis means breaking things down, critical thinking, that is middle order. Or then synthesis, putting things together, creative thinking. And evaluation matlab judgment. So this are
two are the higher order. So middle and जो higher order है, they comes under the higher order thinking skill. We call it first like application, analysis, synthesis, and evaluation. Whereas lower order thinking skills are knowledge and comprehension. So knowledge means knowledge retention foundation for the higher order thinking. Then understanding of that gained knowledge, that is the comprehension. So in that way, Bloom has categorized the 6 levels of thinking. So the original Bloom's work was later on revised, and the noun was converted into verb form. The knowledge is converted into remembering. Comprehension was converted into understanding. Application was converted into applying. Analysis was converted into analyzing. Synthesis has placed on higher order. Creating में convert किया. Evaluation को evaluating में convert किया, and evaluation was placed on 5th level, and synthesis was placed converted into creating and placed on the 6th level. So revised Bloom's taxonomy: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating, which I explained you with the example of a small baby. Now, if you look at the level, so remembering and understanding are the lower level, applying and analyzing are the middle level, and evaluating and creating is the higher level. As far as thinking is concerned, meaning if applying, analyzing, evaluating, and creating are comes under the higher order thinking skills, whereas remembering and understanding comes under the lower order thinking skills. So now, while writing the learning outcomes, we need to focus on all these 6 levels. ये 6 लेवल के ऊपर हमको लर्निंग आउटकम्स लिखना चाहिए, और उसमें more weightage should be given on higher order and middle level, whereas less weightage should be given on remembering and understanding, that is the lower level. So how to write learning outcome? We need to write, first of all, we need to focus on different verbs which can be used. So let us understand what remembering means. The learner is able to, or learner will be able to recall, restate, and remember learned information. So remembering means, can a student recall information? That means if a student is able to recall the information, he will be at the level of remembering. So the learner is able to recall, restate, remember learned information. तो इसके अंदर जो आता है वो है recognizing, locating, naming, retrieving, listing. इस तरह की एक्टिविटी यदि हम बच्चों को करवाते हैं या उनसे हम पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लोअर मोस्ट लेवल. वी कॉल इट रिमेंबर. सो फॉर remember or remembering or knowledge, that means ability to recall or remember facts without necessarily understanding them. यदि आप केवल remembering या knowledge के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? It is just mugging up the concept without understanding or recalling the concept without proper understanding. So certain action verbs which indicate that the student will be, please focus what I am telling you, student will be able to, छात्र अपनी क्रिया को करने के लिए will be able to arrange, collect, define, describe, duplicate, enumerate. These all are the different action verbs which we can use while writing the learning outcome. So ये जो action verbs हैं which indicates the lowermost level, that is called remember. Then remembering is same, मतलब questions. जैसे मैंने आपको बोला कि learning outcome केवल learning क्या स्टूडेंट कर सकता है वो भी शो करते हैं, और हम लर्निंग आउटकम के ऊपर अपने इवेल्यूशन भी कर सकते हैं. तो इफ यू आस्क क्वेश्चन व्हाट हैपेंड आफ्टर, तो इट इज जस्ट अ रिमेंबरिंग स्टेम को शो करते हैं. हाउ मेनी, दैट आल्सो इंडिकेट्स द only the number of he has to recall. So what is, it is just a recall type. Who was it, that, name, find the definition of,
describe what happened after, who spoke to, which is true or false. ये सब क्या है? ये सब रिमेम्बरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम अपने यूजुअली इन हायर एजुकेशन वी यूजुअली more and more focus on remembering and understanding, but as a teacher we have to frame our learning outcome on all the 6 levels. Now लर्निंग आउटकम्स का कैसे लिखना, जो कि मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ. द स्टूडेंट विल बी अब नाउ सम एग्जांपल्स, सम आर रिलेटेड विद द डिफरेंट डिसिप्लिन, जो कि है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू. अब इसमें क्या है? ऑडियंस मतलब कंडीशन में ABCD जो मैंने आपको बताया था. ए मतलब audience or student. So everyone has to write the students will be able. Why to write in the term of will be? Because it is a future statement. After learning from you, the student will be able to. Up B part matlab behavior, will be able to recall. Condition, genetic terminology, homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, homologous, chromosome pair, etc. Okay, so condition and up to level degree. Similarly, the student will be able to identify and consider ethical implications of scientific investigation. Student will be able to describe how and why laws changes and the consequences of such changes on society. Student will be able to list the criteria to be taken into account when caring a patient with tuberculosis. Student will be able to define what behaviors constitute unprofessional practice in the solicitor-client relationship. Student will be able to describe the process used in engineering when preparing a design. These are some demonstrative evidences or some of the learning outcome which is based on the remembering or knowledge level. तो आप इसमें देख लीजिए जो मैंने दिखा है, recall, identify, describe, list the criteria, define, describe, ये सब क्या है? ये सब different behavior हैं which shows the first system, that is which shows the first level, that is remembering or knowledge. Now second tier is understanding. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट ग्रास्प मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग व्हाट हैज बीन लर्न. जो उसने सीखा है उसको वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है. तो सर्टेन अंडरस्टैंडिंग मतलब ही विल बी एबल identify, comparing, exemplify, explain, inferring, interpreting, paraphrasing, summarizing. Can a student explain ideas or concepts? क्या स्टूडेंट कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता है? तो दैट कम्स अंडर द अंडरस्टैंडिंग. अब वो एक्सप्लेन कब कर पाएगा? जब उसके सारे एट्रीब्यूट्स को वो समझेगा, तभी वो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा. तो comprehension या understanding, ability to understand and interpret learned information. Certain action verbs such as associate, change, clarify, classify, this is a list which I have given you. Contrast, convert, decode, defend, all can be used for the as a verb in framing the learning outcomes based on comprehension या understanding को. Will be able to select, solve, translate like that. Now, understanding stands questions which shows the understanding level. Explain why. Write in your own words. How would you explain? Write a brief outline. What do you think would have happened next? Who do you think is better? What was the main idea? Clarify, illustrate. Like that questions, when you ask, it shows the understanding level. Then some learning outcome. The student will be able to differentiate between civil and criminal law. The student will be able to identify participants and goals in the development of electronic commerce. Student will be able to predict the genotype of cell and undergo meiosis and mitosis. Student will be able to explain the social, economic, and political effects of World War on the post-World War world. Student will be able to classify reaction as exothermic and endothermic.
student will be able to recognize the forces discouraging the growth of the educational system in India in the 19th century. Like that, if you are making the learning outcome, or since you are teaching like what are the factors which discourage the growth of educational system in India, and you frame so such type of learning outcome, the student will be able to recognize the forces discouraging the growth of the educational system in India in 19th century. That means you are framing the learning outcome based on understanding or comprehension level. Now, applying or application, we call it applying. The student make use of information in a context different from one in which it was learned. So, implementing, using, carrying out, executing. Can a student use the information in another familiar situation? जैसे मैंने आपको बताया कि baby has seen the firki and she says or he says when. The same way, when you apply your learned knowledge in a new situation, another familiar situation, we can call it application. So application के लिए certain verbs will which can be used. So ability to use learn material in new situation, put ideas and concepts to work in solving problem. So we can use action verbs such as apply, assess, calculate, change, choose, complete, compute, construct. Now, if I'll say that the student will be able to construct their own learning outcome based on 6 levels of Bloom's taxonomy, it is application. Then dramatize, employ, examine, experiment, find, illustrate, solve, transfer, use, etc. These all are certain action verbs which can be used while framing the learning outcome based on application. Now, applying state instance to explain another instances where group by characteristics such as which factor would you change if, what questions would you ask of, from the information given, develop a set of instructions about some activity. So इस तरीके के questions which is based on application or applying things. Now, certain learning outcomes based on application. The student will be able to construct a timeline of significant events in the history of India in the 19th century. Student will be able to apply knowledge of infection control in the maintenance of patient care facility. ये सब अलग अलग discipline, अलग अलग subject, अलग अलग उसपे हैं. The student will be able to select and employ sophisticated techniques for analyzing the efficiency of energy uses in complex industrial process. Student will be able to relate energy change to bond breaking and formation. So like that, if you are giving such type of learning outcome, framing such type of learning outcome, it will show the evidence of application. Now, the fourth level is analysis. We call it analyzing. Analysis का मतलब होता है student breaks learned information into its part to best understand that information. So like attributing, comparing, deconstructing, defining, integrating, organizing, outlining, structuring. Can a student break information into parts to explore understanding and relationship? That means ये जो analysis है इसमें student will be able to compare two different aspects. They can break the learned information, they can explore, and they can develop their own understanding. So this is analysis. और analysis के बेसिक मतलब होता है ability to break down information into its components, look for interrelationship and ideas, understanding or of organizational structure. Certain action verbs we can use for framing the learning outcome based on analysis, like analyze, appraise, arrange, break down, calculate, categorize, classify, compare, connect. Any action verb which you can use while framing the learning outcome based on analysis. This is a list which I have given you. So examine, experiment, identify, illustrate, infer, inspect, investigate, order, outline, point out, question, recognize, like that. Now, the questions which shows the analysis level, which events could not have happened. If I'm asking that if this corona would have not come, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यदि हम ये क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं तो वो कोरोना क्या है,
कोरोना की डिसीज क्या है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, कैसे उसका इफेक्ट ऑन मॉनिटाइजिंग पर है, कैसा उसका इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ, कैसा उसका सोशल इफेक्ट हुआ, कैसा उसका इमोशनल इफेक्ट हुआ, कैसे उसका फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। ये सारी चीजें जब तक उसको पता नहीं होगी तब तक उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं कर पाएगा। इफ हैपेंड व्हाट माइट बी एंडिंग हैव बीन, हाउ इज सिमिलर टू, व्हाट डू यू सी एज अदर पॉसिबल आउटकम्स, व्हाई डिड चेंजेस ऑकर, explain why must have happened up, what must have happened when. And now when I say that what is the impact of global वार्मिंग ऑन एनवायरमेंट, तो ये क्या होगा जब ये इस तरीके का आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो व्हाट वुड, तो इसका मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एनवायरमेंट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला हुआ कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, बच्चे ने जो पढ़ा है लिखा है वो सब एज इट इज लिख देगा। बट इफ यू आस्क की impact of global warming on Nagpur environment. Write the impact of global warming on Nagpur's environment. So of course the child will think, he will analyze the global warming क्या होता है, how it is affecting, what is the impact, or what is the impact of tree cutting on Nagpur's environment. So then of course the child will think and he will explain in his own words. So of course he will be at the stage of analysis. Explain what must have happened when, what are some of the problems, distinguish between what were some of the motives behind, what was the turning point, what was the problem with. Like that you can ask such type of questions in your question paper. It will show you are trying to reach the level up to the analysis. Then certain learning outcomes. Student will be able to analyze why society criminalizes certain behavior. Student will be able to compare and contrast the different electronic business model. Student will be able to categorize the different areas of specialized interest within dentistry. Student will be able to calculate gradients from mass in meter, kilometer, percentage, and ratio. Student will be able to critically analyze a broad range of text of different genders and from different time periods. Student will be able to compare the classroom practices in a newly qualified teacher with that a teacher of 20 years teaching experience. इस तरीके के जो हम लर्निंग आउटकम बनाते हैं, तो ऑफकोर्स हमको ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगी। पढ़ाते समय, एक्सप्लेन करते समय अलग अलग एक्टिविटीज कराना पड़ेंगी, तभी वो एनालिसिस लेवल पर पहुंचता है। नाउ द फिफ्थ लेवल इज इवेल्युएटिंग। तो इवेल्युएटिंग का मतलब होता है student makes decision based on in-depth reflection, criticism and assessment. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि when baby has grown up, अब वो पेन के बदले सीधा जाकर के कहाँ बैठता है, एसी के सामने बैठता है। इसका मतलब उसने कंपेयर किया कि फैन और एसी के बीच में। द सेम वे हियर, checking, critiquing, detecting, experimenting, hypothesizing, judging, monitoring, testing. Can a student justify a decision or course of action? तो ये जो है वो इवेल्युएटिंग सेम है। और इवेल्युएशन के लिए का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल और ए गिवन पर्पस, समेटिव एंड जजमेंटल। use we can use certain action verbs such appraise, ascertain, argue, assess, attach, choose, compare, conclude, contrast, convince, criticize, decide. Now if I'll ask you the question that any question in which you can say that you can put your comment, you can write the criticize the effect of demonetization on Indian economy, then of course the child should be able to evaluate the impact of the global economy or global of impact of economy on demonetization, like that. So decide, define, discriminate, explain, evaluate, interpret, like that action verb can be used to frame the learning outcome. Then questions, judge the value of, what do you think about, defend your position about, do you think is a good or bad thing, how would you have handled, what changes would you recommend, do you believe, how would you feel if, how effective are,
what are the consequences, what influences will have on our lives, what are the pros and cons of what is like content of value, what are the alternatives, who will gain and who will lose, like that questions if you ask, then they will show the evaluation level or the fifth level of the Bloom's taxonomy. Certain learning outcomes, the student will be able to assess the importance of key participation in bringing about changes in Indian economy. Student will be able to evaluate marketing strategies for different electronic business model. Student will be able to summarize the main contribution of Michael Faraday into the field of electromagnetic induction. Student will be able to predict the effect of change on temperature on the position of equilibrium. Student will be evaluate the key areas contributing to the craft knowledge of experienced teacher. Like that uh, type of learning outcome will indicate the level of evaluation or the fifth level. Then last level is the creating, that is the supermost and high, next highest level है. Student creates new ideas and information using what previously has been learned. सीखे हुए इंफॉर्मेशन से वो नया कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, नया डिजाइन बनाते हैं, नया प्लानिंग करते हैं, नया प्रोडक्ट इवॉल्व करते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं. Then it is the creating level. Can a student generate new products, ideas or ways of viewing things? यदि हमने कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी पढ़ाई और कुछ स्टूडेंट ने उस थ्योरी को नई सिचुएशन में अप्लाई किया, नया कॉन्सेप्ट हम अप्लाई किया और कुछ नया एग्जाम्पल्स कोट किए, तो इट विल लेवल ऑफ द क्रिएटिंग. So ability to put parts together and create new ideas from old content. So use action verbs such as argue, arrange, assemble, categorize, collect, combine, compile, compile, like that. Prepare, propose, rearrange, reconstruct, relate, like that. That action verb summarize करना, this is also a highest level में आता है. Or we can ask question, design a to like design a new model, devise a possible solution to, if you had access to all resources, how would you deal with, devise your own way to, what would happen if, how many ways can you create new and unusual uses for, develop a proposal which would give you this, like that questions यदि आप पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो of course it is at the level of highest creating level पर पहुंचता है. Certain learning outcomes which is showing you, which I'm showing you as a model, as a some base, the student will be, it is related with the different discipline, different subjects. The student will be able to recognize and formulate problems that are amenable to energy management solution. The student will be able to propose solution to complex energy management problems. The student will be able to summarize the cause and effect of 1917 Russian Revolution. The student will be able to relate the sign of enthalpy changes in exothermic and endothermic reactions. Student will be able to organize a patient education program. Like that, if you are framing the learning outcome, of course, suppose karo you want to develop a patient education program developed by the student himself. That means he should be able to know the pros and cons of different ideas, aspects, and then he can devise a new program. So in that way, this is highest level of Bloom's taxonomy. And if you are, as a teacher, we have to frame the learning outcome right from the lower to higher level. But usually हम जो भी पढ़ाते हैं, हमें maximum we should focus on the higher order, that is the analysis, synthesis and evaluation और application. हमारे क्वेश्चंस भी ज्यादातर आपने देखा होगा अपने यूनिवर्सिटी का पेपर में मेजर टाइम हम रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं. Rarely we ask question based on application, analysis, synthesis and evaluation. So it is better that we should frame such type of learning outcome. हमारी टीचिंग में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, maximum focus should be given to the higher order, development of higher order thinking skill in our framing of a learning outcome, as well as selecting our content and teaching strategies also. So everywhere in classroom situation also normal NPC follows, normal probability curve works. So in framing the learning outcome also, we should frame minimum 20% questions based on remembering and
40 to 50% be based on application analysis, and remaining 20 to 30% should be framed on the synthesis and evaluating, that we call evaluating and creating. तो हमारी टीचिंग उतनी इफेक्टिव होगी, हम बच्चों में क्लास में डिस्कशन फोरम को स्टार्ट कर पाएंगे. So that's why it is very important that we should go for the higher order thinking. तो लोअर लेवल, अब जैसे क्वेश्चनिंग की हम बात करें तो लोअर लेवल क्वेश्चंस, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लोअर लेवल अप्लाइंग लेवल, evaluate student preparation and comprehension, diagnose student strength and weakness, review और summarizing content के लिए हम यूज कर सकते हैं. Whereas higher order level question requires complex application, analysis, evaluation on creation skills. Higher level questions encourage students to think more deeply and critically. They facilitate problem solving ability. They encourage discussion. Higher order questions stimulate students to seek information on their own. तो यदि हमको हमारी ओबी में, हमने प्रोग्राम आउटकम में, यदि हम स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना चाहते हैं, वी वांट दैट ही शुड बी एबल टू डिस्कस, एनालाइज द थिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, then of course we have to start questioning and framing learning outcome based on higher level questions. So let us go for the affective domain. We am not focusing much on, but affective domain again has 5 levels: receiving, responding, valuing, organizing, and categorization. Affective domain deals with the feeling, concerned with value, issues involve attitude. So right attitude develop करने के लिए willingness to receive information, create a good learning environment for the children. For that, we, as in our, because I'm a teacher trainer since so many years, so we always started our classes by telling the student that say something which motivates your learner, which makes your learner ready to receive what you are going to teach. तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि आप जाते ही क्लास में या तो कोई क्वेश्चन पूछिए या कोई एग्जाम्पल कोट करिए, उनको उनके डे टू डे लाइफ से आपकी डेली टीचिंग को कोरिलेट करिए. तो फिर in that way we can develop a feeling or concern with value. So willingness to receive information, responding मतलब active participation in own learning, valuing, commitment to a value, comparing, relating, synthesis value, characterization, integration of beliefs, ideas, and attitudes. Such type of action verbs will shows the level. Now, affective domain के action verbs appreciate, accept, assist, ये सिचुएशन के हिसाब से हम इनको यूज कर सकते हैं based on these all are the 5 different levels. तो रिसीविंग का मतलब होता है विलिंगनेस टू रिसीव इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ओन लर्निंग, वैल्यूइंग का मतलब कमिटमेंट टू अ वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंपेयरिंग, रिलेटिंग, सिंथेसाइजिंग, वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बिलीफ, आइडियाज एंड एटीट्यूड. So these all are certain list of action verbs which can be used for the affective domain. Then psychomotor domain, that means doing. Psychomotor matlab doing, domain work. This work was never completed by Bloom. Involves coordination of brain and muscular activity. Active verb for this domain is bend, grasp, handle, operate, perform, reach, relax, shorten, stretch, differentiate, by touch, platform skills. Most of the time we need this psychomotor domain learning outcomes for our practical activities. तो जो प्रैक्टिकल की जो भी आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओबी की फ्रेमवर्क में वी हैव थ्योरी सब्जेक्ट, वी हैव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आल्सो. तो जब भी प्रैक्टिकल के आप सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी साइंस की क्लासेस हों, चाहे वो आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस हों, चाहे लॉ में जब आप कोई सेमिनार प्रेजेंट करने को बोलते हैं या जब आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज के अंदर, वो सारी एक्शंस के अंदर आप साइकोमोटर डोमेन का यूज कर सकते हैं. And you can formulate your learning outcomes based on this action verbs. So psychomotor, let us take this competent individual means he should have knowledge, that is cognitive domain, he should have a right attitude towards, that is affective domain, and he should have a right skills, that means psychomotor domain skills in broad sense. So a competency means knowledge, attitude, and skills.
So these knowledge and skills and attitude can be developed by framing the right kind of learning outcome as well as by framing right kind of evaluation tools. तो ये तीनों को हम इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. So let us take one example जो मैं आपके साथ में explain करूंगी कि ये 6 लेवल हम कैसे लर्निंग आउटकम्स में कैसे 6 लेवल एक ही कंटेंट के साथ बना सकते हैं. So let us take one example of from science, because basically I am from the science, so I framed with the example first inertia. So the first, like if I define the term inertia, that is inertia की definition वो बता पाएंगे तो वो कौन सा लेवल हुआ, रिमेम्बरिंग का लेवल हुआ. State Newton's first law of motion. Then again, it is understanding level. Student will be able to explain the law with example. It is application. Student will be able to solve problem using the law of first law of Newton. So that's again the analysis level. Student will be able to identify situation from daily life that they can explain with the help of this law. इस लॉ के थ्रू वो अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं. तो दैट इज लेवल हुआ उनका इवेल्युएटिंग का. Student will be apply the knowledge of inertia to problem from daily life. डेली लाइफ की प्रॉब्लम को इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं, तो दैट इज द क्रिएटिंग का लेवल होगा. Now certain advices, because I hope that you will be able to write your learning outcome या course outcome. So इसके लिए कुछ एडवाइस कि learning outcome should be written clearly so that they are understood by students, colleagues and external examiners also. Learning outcome should focus on what you expect students to be able to demonstrate upon completion of module or program. Start with on successful completion of this module, students should be able to. इस तरीके से हमको शुरू करना है क्योंकि आपके पास में आप कोई ना कोई विषय पढ़ाते होंगे और उस विषय के लर्निंग आउटकम आपको लिखना चाहिए और लिखना होते हैं. क्लास के अंदर पढ़ाने से पहले आपको अपने लर्निंग आउटकम लिखना चाहिए. तो अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, इफ नेसेसरी यूज वन देन. एक एक सेंटेंस में ही एक ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे. जनरल रिकमेंडेशंस 5 to 8 लर्निंग आउटकम पर मॉड्यूल. जो भी आप मॉड्यूल के 5 से 8 लर्निंग आउटकम आपके बनना ही चाहिए. मतलब हर कोर्स के 5 से 8 लर्निंग आउटकम आपके बनना ही चाहिए. Checklist for writing learning outcomes for module. Have I begun each outcome with an active verb? क्या मैंने हर आउटकम के लिए एक्टिव वर्ब लिखा है? Have I avoided terms like no? अब आपने लिखा कि student will be able to know. How you will judge no? Student will be able to understand. How you will be able to judge understanding? So avoid such type of terms. Be familiar with, be exposed to, acquainted, aware, ये सब terms को avoid करना है आपको. Then, have I included learning outcomes across the ranges of levels of Bloom's taxonomy? Bloom's taxonomy के जो 6 लेवल मैंने आपको बताए हैं, वो चारों 6 लेवल को आपने क्या कवर किए हैं? Are my outcomes observable and measurable? The most important condition for course outcome या learning outcome that these learning outcomes should be observable and measurable, so that you can judge by asking question based on that outcome. So you can judge whether your student has achieved it or not. Do all the outcomes fit within the aims and content of the module? क्या जो मैंने आउटकम्स फ्रेम किए हैं वो मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं. Now, what are the benefits and potential problems of learning outcome? Of course, I am recommending to write learning outcomes, but कुछ potential problems जो आपको समझना चाहिए. Let us understand first what are the benefits of learning outcome. कि हमने ये learning outcome लिखने का क्या फायदा होगा. It helps to explain more clearly to student what is expected from them or of them. उनसे क्या expectation है वो हमको clearly उनको पता होता है. It helps teacher to focus more clearly on what exactly they want student to achieve. It helps to define the assessment criteria more effectively. It helps to provide guidance to employers about the knowledge and skills possessed by graduates of program. It helps to start discussion on teaching and learning in all types of institutions. This is one of the very important aspects है कि ये
जो है एम्प्लॉयर्स को गाइड प्रोवाइड करते हैं कि आपके स्टूडेंट को कौन से नॉलेज एंड स्किल्स आपके स्टूडेंट में है, क्योंकि when they look at your syllabus, when they look the learning outcomes which you have framed for practical and all these things, they will come to know that the students are able to know all these things. So this is one of the very, very important aspect है. It also helps to define the assessment criteria also, जो कि मैंने आपको जो स्टेम्स दिखाए थे वो असेसमेंट क्राइटेरिया ही है, वो असेसमेंट क्राइटेरिया बनाने में भी हमको हेल्प करते हैं. इफ यू फ्रेम योर लर्निंग आउटकम वेरी इफेक्टिवली, ऑफ कोर्स योर पेपर सेटिंग विल बी वेरी इजी. आप जो पेपर सेटिंग तो बहुत आसान होगा यदि आपके लर्निंग आउटकम बहुत प्रभावी रूप से आप बनाएंगे, तो प्रभावी रूप से आप असेसमेंट के लिए पेपर भी के क्वेश्चन भी फ्रेम कर पाएंगे. सम लिमिटेशंस या पोटेंशियल प्रॉब्लम, यदि हम लर्निंग आउटकम्स को वेरी नेरो फ्रेमवर्क में लिखेंगे तो कई बार इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस टू लर्नर्स नहीं होता है, इसलिए हमको इसको बहुत ब्रॉडन फ्रेमवर्क में लिखना होता है. देन लर्निंग आउटकम शुड नॉट बी रिडक्शनिस्ट बट एक्सपांसिव होना चाहिए एंड इंटेंडेड टू प्रमोट द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. थॉट्स को प्रमोट करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिडक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए. डेंजर ऑफ असेसमेंट ड्राइवन करिकुलम इफ लर्निंग आउटकम टू कन्फाइंड. यदि हमने टू कन्फाइंड लर्निंग आउटकम बोले कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड राइट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द डेफिनेशन और डिफाइन द टर्म, देन ऑफ कोर्स इट इज टू कन्फाइंड होंगे. तो इसलिए हमको अपने एक्सपांस हमारे जो लर्निंग आउटकम है उनको असेसमेंट ड्राइवन करिकुलम के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, हमको उसको बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बनाना चाहिए. देन what are the implications? So a stronger student focused, student centered learning is possible. Explicit about what graduates are expected to know, be able to do. It encourages critical thinking and the active engagement of a student. That is also very true. कि ये हमारी critical thinking को encourage करते हैं, active engagement करने के student को promote करते हैं. To motivate and train academic staff to work within a such student centered paradigm, this learning outcome helps a lot. Now, this is which I have already shown you. This is the matrix of learning outcome. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक प्रोग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के आपको 5 से 6 लर्निंग आउटकम्स बनाना है. हर सब्जेक्ट की थ्योरी में कौन सा लर्निंग आउटकम आपके स्टूडेंट के कौन से प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के साथ मैच कर रहा है. जैसे हर प्रोग्राम के आपने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट के बेसिस पर हर प्रोग्राम के आपने 10 से 12 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स बनाते हैं. वो 10 से 12 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स को अचीव करने के लिए कौन से सब्जेक्ट का कौन सा लर्निंग आउटकम मदद कर रहा है, कौन से लर्निंग आउटकम के साथ मैच कर रहा है, तो हम ऐसा मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा. जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल, the program will develop quality communication skills among the student. या student will be able to communicate effectively. अब communication skills के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज communication skills, तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन से मॉड्यूल के कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है जो कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहा है, या कोई और लैंग्वेज का कौन सा मॉड्यूल है जो उनके अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहा है. तो इस तरीके से ये मैट्रिसेस बनाए जाते हैं जो कि जो आपको हेल्प करेंगे. आई एम जस्ट ओरिएंटिंग यू टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स. देन अ क्वेश्चन कम्स, विच शुड कम फर्स्ट, प्रोग्राम और मॉड्यूल और लर्निंग आउटकम, कौन सी चीज पहले आती है? दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. विच शुड कम फर्स्ट, प्रोग्राम और लर्निंग आउटकम, क्या चीज पहले आएगी? Of course, first thing प्रोग्राम yes, आउटकम yes, सबसे पहले हमारे होंगे प्रोग्राम आउटकम. एंड एज ए टीचर मॉड्यूल पहले बनेगा कि लर्निंग आउटकम कैसे बनेगा? मॉड्यूल या प्रोग्राम पहले बनेगा कि लर्निंग आउटकम कैसे बनेगा? सबसे पहले लर्निंग आउटकम बनेंगे, तभी तो आप उसके हिसाब से कंटेंट अरेंज करेंगे. कंटेंट अरेंज करेंगे तब फिर आपका प्रोग्राम बनेगा. तो फर्स्ट थिंग, इट इज द बेसिक करेंसी. जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक रुपया कैसे बनेगा? So that's why first thing a teacher has to do is the framing of the learning outcome.
लर्निंग आउटकम्स बनाए आपने, उसके बाद आपने क्या किया, कंटेंट अरेंज किया। कंटेंट अरेंज करने के बाद आप अपना आगे की एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस। अब आप सबके लिए एक होमवर्क है, आपको कोई भी एक विषय लेना है, उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के ऊपर ऑल 6 लेवल्स के लर्निंग आउटकम आपको बनाना है। ओके, एंड यू हैव टू सबमिट दैट framed learning outcome to Preeti ma'am, because Preeti madam is already expert in that. She can easily check your learning outcome. So thank you so much. Now I'm inviting you for discussion. We have 10 minutes for discussion. If anyone who wants to ask me any questions, you can please. So anyone who is interested to have any questions? Any question, friends, or any feedback? Feedback from your side? सो गए क्या सब लोग पोस्ट लंच सेशन में? आर यू देयर? Yes, question teacher. चैट बॉक्स में कुछ तो भी दिख। मैडम हेलो हाँ सर बोलिए। Yes. मैडम, हाउ टू इवेल्युएट प्रोग्राम आउटकम्स? Sir, फिर से question repeat करिए. सो मैडम, हाउ टू इवेल्युएट प्रोग्राम आउटकम्स? Okay. Sir, you are talking about my first session program outcome को हम कैसे evaluate करेंगे. तो प्रोग्राम आउटकम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम आउटकम्स वो चीजें जो कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग 2-3 इयर्स के अंदर बच्चों में डेवलप होते हैं, और उसके लिए हमको एम्प्लॉयर सर्वे, अलुमनी सर्वे, स्टेक होल्डर्स फीडबैक विल हेल्प टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम. ओके मैडम, थैंक यू मैडम. Anyone else? As far as evaluation of learning outcome is concerned, whenever you ask questions based on your learning outcome, your result of your paper will indicate you that whether you have achieved it or not. So आपका unit test, class test, any test can give you idea कि whether your student has achieved it or not. So thank you so much. So let us adopt this centric approach to provide academically rich outcome-based learning environment. That learning environment is for the development of human. So thank you so much. Thank you so much, madam. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Deliberations. Thank you so much, ma'am. So on behalf of HRDC Nagpur, I extend my thanks to you, madam, for both the sessions. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Can I leave, ma'am? Yes, Preeti ma'am, I'll give you some questions for this session. Yes, for ma'am. your assessment. Assessment. Yes, ma'am. Yeah, I'll give you. Okay. Thank you so I'll much, send you ma'am. on WhatsApp. Yeah. Yeah. Am I audible, friends? Yes, madam. Yes, madam. Yes. आप लोग इंटरैक्ट क्यों नहीं करते हैं? Do you have any problem? Your batch is not at all interactive. आप लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? इट्स फॉर एवरीवन. हिंदी में भी पूछ सकते थे, मराठी में भी आप अपनी क्वेरीज, अभी मैडम क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपकी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो? अगर हुए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू शुड आस्क, बिकॉज ये सारी नई चीज़ें हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम ऑफ फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम. सो आई होप आप लोग उनको चीज़ें तो समझी होगी.
समझा होगा तो अच्छा ही है. So just look at your attendance, please. I'll call your name one by one. You please unmute and give your attendance. Dr. Pankaj sir, हाँ यस मैम. Dr. Chinna sir, Dr. Chinna Pungati, Mr. Aniket Madankar sir, Mr. Aniket Madankar. देखिए आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, अदरवाइज एब्सेंटी मार्क हो गया. Am I audible? यस मैम. हाँ यस मैम. यस मैम. Mr. Chandrasekhar Bambole sir, Yes, ma'am. Dr. Prashant sir, Yes, madam. Yes, madam. Dr. Pankaj Nimrakar, Yes madam. Dr. Deepak Ambore sir, Dr. Deepak, Dr. Deepak Ambore. आप मीटिंग में ज्वाइन हैं बट यू आर नॉट देयर फिजिकली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि फर्स्ट सेशन में भी आप नहीं थे. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था अटेंडेंस लेने के बाद, और अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है बट वो अनम्यूट करके प्रेजेंट ही नहीं दे रहे. देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसा करेंगे ना तो दिक्कत आपको आएगी एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एट द टाइम ऑफ ग्रेड्स. आप लोगों को समझ में आ रही है सिवियरिटी, और यू आर टेकिंग इट लाइटली? अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो आई एम आस्किंग. जितनी फिजिकल अटेंडेंस इम्पोर्टेंट होती है उतनी ऑनलाइन लेक्चर्स में भी अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है. तो अभी क्या करेंगे आप ही बताइए. दीपक अंबोरे सर को प्रेजेंट मार्क करो कि एब्सेंट? जो रूल में आता है फॉलो कर सकते मैम. बराबर है ना. अगर आप कोऑर्डिनेटर रहते तो क्या करते, आपके स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, सिर्फ ज्वाइन करके चले जाते हैं आपके लेक्चर को. सो आई एम मार्किंग एज एब्सेंट. अगर ऐसा होता है आगे तो जो भी ऐसा कुछ मुझे दिखता है तो उस दिन की उनकी एब्सेंट ही लगेगी. मिस्टर मंगेश बराते नहीं, नो कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया है. मिस्टर ऋषिकेश शिरभाते सर, मिस्टर ऋषिकेश. Ma'am, yes, या yes, ma'am. डॉक्टर हर्षल गजपिये सर, Yes ma'am. मिस्टर राम बुस्टर सर, यस मैम. डॉक्टर ललिता निकम मैडम, Yes, madam. डॉक्टर नीरव पंड्या सर, डॉक्टर नीरव पंड्या, डॉक्टर गजानन सोनोने सर, डॉक्टर गजानन सोनोने, इन सबको मैं आज की एब्सेंट मार्क कर रही हूँ. ठीक है, मैं मतलब आप लोगों को मैं बता रही हूँ. यू आर द विटनेस फॉर एवरीथिंग. डॉक्टर सोना कुमार मैडम, ठीक है मैम. डॉक्टर सोना कुमार मैम. Ma'am, you were there in the session. Please unmute. Dr. Vinod Kumar Chopkar sir. Present madam. Yes. Dr. Amit Bansod sir. Dr. Amit Bansod. I am marking him as absent. Dr. Ravindra Tirpude. Yes madam. Dr. Om Prakash Panchbhai. Yes madam. Dr. Manda Themne madam. Dr. Manda madam.
Dr. Ratnadeep Sawant sir. Yes, ma'am. Present, ma'am. Dr. Archana madam. Dr. Manoj Thakre. Present, madam. Dr. Jitendra Pearson. Yes, madam. Mrs. Vaishali Sukhdev. Yes, ma'am. Present. Dr. Vijit Mishra. Vijit sir. See, he is there in the meeting. But वो कहीं तो भी मोबाइल रख के चले गए. Just joined the meeting. Fine, I am marking him as absent. Vilas Vani, Dr. Vilas. Yes, madam. Yes, madam. Present. Dr. Vineet Anand Pawar sir. Yes, ma'am. Mr. Om Prakash Jimte sir. Yes, ma'am. जो अभी मैंने 6 लोगों. Yes, ma'am. Yes, yes sir, I mark your attendance. मैंने 6 लोगों को अभी absent मार्क किया है. आप ही के सामने मैंने attendance ली है and they are not. Ma'am, I am also here. जी मैडम. डॉक्टर दीपक अंबोरे. कुठे गेले होते? Padankar here, ma'am. कुठे गेले होते दीपक सर? पहिल्या सेशन मध्ये आणि तुम्ही अटेंडन्स घेत होती तेव्हा आपण. नेटवर्क इश्यू होता थोडा. कामात होतो. पहिल्या पूर्ण सेशन मध्ये नेटवर्क इश्यू होता. जी मॅडम, मी थोडं आउट ऑफ स्टेशन आलो होतो. अर्जंट काम होतं. So you should inform me when you go to out of station or some other places. राइट मैडम. अगर फिजिकल क्लास रहता तो आप जा सकते थे क्या? नहीं मैडम. फिर Ma'am, I am here. देखिए Yes, अनिकेत सर मार्क केली तुमची अटेंडन्स. Thank you, ma'am. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं. अभी बॉल इज इन योर कोर्ट. आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स इन योर ग्रेड्स. तो मुझे लगता है कि आपने सिंसियरली अटेंड करना चाहिए बिकॉज यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू विल गेट ऑन 30th of June. तो आपको वो सारी चीज़ें अर्न करनी है, सीखना है. तो अभी मैं आप लोगों को कंपल्शन तो नहीं करूँगी बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे एज यू हैव ज्वाइन दिस कोर्स विलिंगली. किसी ने जबरदस्ती से आपको यहाँ पे नहीं बिठाया है. आप लोगों ने अप्लाई किया, आपका नंबर लगा, आपके विलिंगनेस से ही आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है ऐसा मुझे लगता है. तो आपने इसको 100% अच्छे से करना चाहिए. अदरवाइज दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. बट जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वो डेली मार्क होते जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा रिसोर्स पर्सन के साथ इंटरैक्टिव रहिए. मतलब उनको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोग भी अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए. यस मैम. थोड़ा मैडम स्टेशन में अब इतने क्वेश्चन आ रही थी नहीं हुआ माइंड में. थैंक यू मैडम. चिन्ना सर, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली है, क्लियर कर ली. हा मॅडम, ते एक लेक्चर असं होतं की ते इंग्लिशच सांगितलं आहे. आमचं घरचं मराठी मीडियम वाला ते समजायला थोडं अडचण होते. अच्छा, तर मी त्यांना सांगितलं होतं सर हिंदीमध्ये सांगायला, कारण की ते मराठी नाही बोलू शकत म्हणून. आजच्या सेशन तर मॅडम हेवी झालं मॅडम थोडं लेक्चर आहे. सर टॉपिक कसं आहे ना, तो आपला रोजचा टॉपिक नाही आहे त्याच्यामुळे आपल्याला तसं वाटतं. हे सगळं एम.एड. बी.एडच्या सिलेबस मधलं आहे तर आपल्याला थोडं ते कठीण जातं. माझ्यासाठी पण या गोष्टी, म्हणजे आय एम बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, तो कैसे जो लोग बी.एड. एम.एड. करके आते हैं सिस्टम में, उन लोगों के लिए ये चीजें इजी है. बट ठीक है, नहीं है तो अपने को सीखनी तो है ही चीजें. 3 घंटे में तो सीख नहीं पाएंगे बट कुछ तो भी नई टर्म्स तो अपने को समझ में आई थी ना उसमें से. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रुकते हैं. कल मिलेंगे सुबह. सेमिनार का मैंने बता दिया. सेमिनार कब से है आप लोगों के? 21. ठीक है. तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में प्रिपेयर करिए. और जो मराठी और हिंदी में प्रिपेयर करेंगे प्लीज मेक इट इनटू पीडीएफ फॉर्मॅट. पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करा आणि मी एक गुगल फॉर्म पाठवेल, त्या गुगल फॉर्म मध्ये अटॅच करून ते पाठवायचं आहे. मॅडम इंग्लिश मध्ये राहिलं तर फॉर्म दे देना. इंग्लिश मध्ये चिठ्ठी तयार केली तर चालेल ना. इंग्लिश मध्ये गेले तर त्याला पीपीटीच राहू द्याल. इंग्लिश फॉन्ट्स काही प्रॉब्लेम येत नाही, त्याला पीडीएफ नाही केलं तरी चालेल. फक्त जे हिंदी आणि मराठी वाले आहे
त्यांनी PDF करून ओके मॅडम. किती वेळेचं ओके मॅम.